Hello everyone, welcome to Unacademy and welcome to this session. So guys, listen to our new anthem, that is Let's Crack GATE and ESE with India's largest learning platform. So guys, before proceeding further, let me introduce myself. Guys, I am Krishan Dev. I did BTech from NIT Silchar in CSE. I also studied at IIT Ropar and at JNU New Delhi during post-graduation. Along with that, I am GATE as well as NET JRF qualified in computer science. And guys, if finally we talk about teaching experience, then I have more than 4 years of experience in GATE CSE. Now let's talk about Unacademy. So guys, everybody knows about Unacademy, that is India's largest online learning platform. So you can see or you can download Unacademy learning app from Play Store or Apple Store. And after downloading, what you are going to get, I am going to explain one by one. So very first thing is daily live lectures. That means every day there will be a live sessions. So you can participate in live discussions as well as you can raise your queries and doubts in the live sessions. Second one is live test and quizzes that will be provided on Unacademy learning app. Third one is structured courses. That means the courses provided on Unacademy are in very structured manner. And final one is unlimited access. That means once you get the subscription, then you will be able to access the plus courses. And on plus courses, every course is covered with very comprehensive manner. So once you get the subscription and by chance you miss out any live lecture, then the same lecture can be seen in the recorded form also. I think that is the greatest advantage. Now guys, you know very well on Unacademy, India's topmost educators are there. So you can see various courses are available on Unacademy platform. So guys, finally let's talk about subscription plans. So guys, use my code, that is DEV1 DEV1 during subscription and get a discount of 10%. Okay. So what are the benefits of taking the discount? Yes. So firstly, you will be provided 100% GATE syllabus with live lectures, and you will miss out the by chance you miss out the live sessions, then the same lecture can be seen in the recorded form also. For instance, if you want the subscription for 24 months, then the amount is 44,000. Use my code, that is DEV1 DEV1 during subscription and get a discount of 10%. Then the final amount after discount will be 39,600. Similarly, let's say if you want the subscription for 3 months, then the amount is 13,750. Use my code, that is DEV1 DEV1 during subscription and get a discount of 10%. Then the final amount after discount is 12,375 and so on. So guys, you can download Unacademy learning app, and after downloading you can follow me on Unacademy learning app. My profile link is given in the description of this video. From there you can follow me so that you will be getting the notifications regarding live lectures, okay, or live test and quizzes. So you can see live test and quizzes will also be provided to you. These tests and quizzes will include, firstly we can say topic wise test, then you will see subject wise test, and finally you will be provided full length or mock test also. Along with that, those students who are BTech appearing, they can prepare for their semester examinations also. Also you can prepare for your campus placements and interviews, because you can see various coding related courses are also available on Unacademy platform. Okay. Yes. So guys, tell me, am I audible or not? So guys, remember my code, that is DEV1 DEV1, and use this code during subscription and get a discount of 10%. Yes. Okay. So guys, tell me, am I audible or not? Yes. So in the last lecture, yes, we started a recurrence relation. Okay. In the last lecture, we started a recurrence relation.
and we seen how to write a recurrence relation for a given counting problem. Also, we discussed the types of recurrence relation. Yes, good evening, guys. So we can say that, yes, I already told you guys that, yes, basically a recurrence relation is divided into two categories. First one is non, that is determinate, recurrence relation of determinate order. And second one is indeterminate order. Yes or no? So we see in, yes, what is the recurrence relation of determinate order as well as what is the recurrence relation of indeterminate order. In the last lecture, we discussed this one. Also, determinate order is further divided into two types. First one is linear recurrence relation. Second one is non-linear. Also, yes, we discussed linear is further divided into two types, that is LRCC as well as LRVC. And finally, we seen LRCC is further divided into two types, that is homogeneous LRCC as well as inhomogeneous LRCC. Yes or no? So today we'll see solving techniques of homogeneous LRCC as well as inhomogeneous LRCC. Okay. So write down, yes, solving, yes, or solving technique for, we can say that solving homogeneous LRCC. Homogeneous LRCC, yes, by, we can say that characteristic root method. Isn't it? So firstly we'll see, yes, what is the technique for solving homogeneous LRCC. Yes, you only tell me, guys. Yes, consider one example. From this example we'll see what is the technique. Yes or no? So let's say solve this particular recurrence relation. Let's say this one is given to you, T of n, yes, equals to, yes, 7 T of n minus 1 minus 12 T of n minus 2. Now you only tell me, yes, where n is greater than equals to 2 and initial conditions are also given to you. T of 0 equals to 1 and T of 2 equals to 2. Now you only tell me, this recurrence relation is homogeneous LRCC or not? You only tell me. Yes, we can say that firstly it is of determinate order. Second one is indeterminate order, it is of linear type. Third one, we can say that in linear it is LRCC and in LRCC it is homogeneous. Yes or no? Now you only tell me, yes, yes, this one is homogeneous. Why? Because if we shift the recursive terms in left hand side, then it becomes Tn minus 7 T of n minus 1, yes, plus 12 T of n minus 2 equals to 0. So in right hand side there is 0. So we can say that this one is homogeneous recurrence relation. Yes or no? Now what I have to do? Yes, you only tell me, guys. Solution. Yes, firstly, yes, we'll write characteristic equation. Listen me correctly. Yes, it is of homogeneous type. So how to write characteristic equation? Listen me correctly. Yes, put, yes, listen me correctly. Yes, आप बताओ lowest subscript क्या है? n minus 2. So put t of n minus 2 equals to t raised to power 0. That is one. Then, yes, next smallest, yes, that is t of n minus 1. Put it equals to t raised to power 1. That is t. And then last one, greatest is t of n. So put it equals to t power 2, that is t square only. Yes or no? And so on. So you only tell me, when we substitute t of n equals to t square, so this equation will become characteristic equation t square minus 7t plus 12 equals to 0 or not? Yes guys, you only tell me. Yes, यही बनेगा. Now what are the roots? You can see that this can be written like this or not. T minus 3 into t minus 4 equals to 0. So here we can say that roots are 3, 4. Yes or no? So first step is what? Write down the characteristic equation. How to write the characteristic equation?
Yes, put a lowest subscript equals to t raised to power 0, then next smaller t raised to power 1, then next t square and so on. Yes or no? Isn't it? Tell me this one is clear to everyone or no? So we can say the general solution, yes, the general solution can be written general, or we can say that homogeneous solution. Isn't it? Is given by, we can say that, yes, that is given by the equation t of n equals to, take one constant c1 into 3 raised to power 1 n. 3 is what? 3 is the one of the root of characteristic equation. Then plus c2 into 4 raised to power n, and assume that this equation is 1. Yes or no? आपने देखा, मान लो 3 रूट होते तो c1 इंटू 3 रेज टू पावर n प्लस c2 इंटू 4 रेज टू पावर n प्लस c3, जो भी रूट है रेज टू पावर n, नथिंग एल्स. Isn't it? Tell me this one is clear to everyone or not? Yes. Now you only tell me, आपने homogeneous solution लिखा. Now find out the values of these constants c1 and c2. So use, yes, these initial conditions. Now you only tell me, yes, t of 0, t of 0 is becomes what? We can say that, yes, c1 into 3 raised to power 0 plus c2 into 4 raised to power 0, that is equals to 1, that is given to you 1. So it becomes what? C1 plus C2 equals to 1. This is, let's say, equation 2. Now second condition, initial condition is given to you, t of 2 equals to 2. So put 2, n value equals to 2. So it becomes what? 9C1 then plus 16C2 equals to 2. Let's say this is equation 3. So by using equation 2 and equation 3, yes, you only tell me what is the values of c1 and c2. Yes, you only tell me, guys, what is the value of c1 and what is the value of c2. You only tell me, guys. Yes, what are the values of c1 and c2? Yes, you can see c1 value will be 2 and c2 value will be -1. So put these values in equation 1. So we can say that Tn equals to, yes, 2 into 3 raised to power n minus, we can say that, yes, 4 raised to power n. That is your required solution. Isn't it? कोई doubt है इसमें? Yes, guys, tell me. कोई भी doubt है तो बोल सकते हो. Yes, you only tell me this one is clear to everyone or not. Tell me once. Clear है सभी को? तो सबसे पहले step 1 is what? Write down the characteristic equation. Then this is the step 1. Then you can see that next step is this one. General solution is given by this equation, step 2. Then we can say that in step 3, find out the values of constant c1 and c2. And final step is step 4. Yes, put these values in equation 1. That is step 4. So steps are, yes, in total there are 4 steps. Yes, you can easily solve this particular, yes, recurrence relation or not. Isn't it? Yes. Now you only tell me, guys. Yes, you only tell me. Answer now. Let's say one equation is given to you, Tn minus 7 t of n minus 1. Let's say plus 4 t of n minus 2. Then plus, let's say, 2 t of n minus 3 equals to 0. Now you only tell me what will be the characteristic equation. Yes, tn minus 3 को t par 0 से replace करना है. सेकेंड स्मॉलेस्ट है उसको टी पावर 1 से, देन इसको नेक्स्ट स्मॉलेस्ट को टी पावर 2 से, और जो ग्रेटेस्ट है उसको टी क्यूब से. नाउ इक्वेशन विल बिकम्स व्हाट? टी क्यूब माइनस 7 टी स्क्वायर प्लस 4 टी रेज टू पावर 1, then we can say that plus 2, that is equals to 0. Now find out the roots and accordingly you can write down the general solution. Yes or no? This one is clear to everyone or not? Isn't it? Okay, let's say write down one note. You only tell me, guys. You only tell me. Yes, let's say, yes, the roots are, let's say the roots are, yes, we can say that, let's roots are, yes, roots are 2 comma 3. Then general solution will be what? We can say that c1 into 2 raised to power n plus c2 into 3 raised to power n. Yes, now you only tell me, let's say if roots are 2 comma 3 comma 4, then tell me what will be the general solution.
This one will be C1 2 raised to power n plus C2 into 3 raised to power n plus C3 into 4 raised to power n and so on. But remember guys, if roots are matching, let's say both roots are same, then if you write the yes recurrence relation like this, yes, general solution is like this. C1 into 2 raised to power n plus C2 into 2 raised to power n. तो यहां से आप 2 raised to power n कॉमन लोगे तो आप बनेगा C1 plus C2 into 2 raised to power n and constant plus constant will one some constant C into 2 raised to power n. तो आपने देखा जो डिफरेंट दो टर्म्स थी वो एक टर्म में रिड्यूस हो गई, बट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर ये अगर दो रूट्स हैं तो आपकी कितनी टर्म्स होनी चाहिए, टू टर्म्स होनी चाहिए. So according to procedure, what to do? As when roots are matching, then general solution is written like that C1 into 2 raised to power n plus multiply second term with n, then it becomes n into C2 into 2 raised to power n. Yes or no? Clear? Yes, you only tell me. तो root match होंगे तो ऐसे लिख पाओगे? Yes, tell me guys, this one is clear to everyone or not? Now you only tell me, let's say next example, let's say roots are t equals to 2 comma 2 comma 3. Now you only tell me what will be the general solution. Yes, c1 into 2 raised to power n and multiply with n to differentiate with first term, that is c2 into 2 raised to power n. Then next one we can write down c3 into yes 3 raised to power n. Yes or no? Yes, you only tell me. Next one, final one, you can take one more example. Let's say three roots are there and all are matching. If all are matching, then general solution can be written like this one. C1 into 2 raised to power n. So multiply with n to differentiate this term with yes first term. Yes or no? Now to differentiate third term with second term, multiply this term with n square and so on. This one is clear to you or not? Tell me once. Yes, guys, tell me, isn't it? Tell me this one is clear to everyone or not? Isn't it? Okay, आगे बढ़े नेक्स्ट वन. तो होमोजेनियस का सॉल्यूशन जो भी सॉल्विंग टेक्निक है, प्रोसीजर है, दैट इज सिंपल वन. यस और नो? ओके, राइट नाउ नेक्स्ट वन, दैट इज योर सेकंड वन, दैट इज सॉल्विंग इन होमोजेनियस LRCC. That is very very important. Mostly question in previous year exams you can see these questions will be from yes inhomogeneous, mostly questions from inhomogeneous. Okay, so we can see mostly questions will be there from inhomogeneous. So we'll see what is the procedure of solving inhomogeneous yes LRCC yes by characteristic root method. That is important one. Yes, we'll see. Finally, we'll see some gate questions also. So listen me correctly, guys. This one is important one, and we'll see all variations in this particular type. Okay. Okay. So yes, guys, you only tell me. Yes. Firstly, we'll see. Yes. Let us consider one example. Let's say consider, for instance, consider yes a inhomogeneous LRCC. Isn't it? Inhomogeneous LRCC. That means the recurrence relation is in the form of inhomogeneous LRCC. Let's say, yes, let us consider, yes, that recurrence relation is an plus 3an minus 1 plus 2an minus 2 equals to 5n plus 2. So from, yes, we can say that this recurrence relation, we can see that this recurrence relation is of inhomogeneous type. So what are the steps required to solve this particular inhomogeneous linear recurrence relation with constant coefficient? Okay, so listen me correctly guys. Yes, you only tell me. Yes, what is step one? आंसर देखना, what is step one? Yes, recurrence relation जितने भी ध्यान से देखना, रिकर्सिव टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेने के बाद राइट हैंड साइड में अगर कुछ बचता है means something is remaining, then that is known as inhomogeneous. So first step is put whatever be the right hand side equals to 0, that means put it equals to 0. Yes,
Now you only tell me, now recurrence relation becomes what? Yes, we can say that an plus 3n minus 1 plus 2an minus 2 equals to 0. तो आपने देखा ये आपका होमोजेनियस बन जाएगा, यस और नो? ठीक है, तो अब आप इसको कैसे सोल्व करोगे? जैसे होमोजेनियस को आपने सोल्व किया तो आप बोल सकते हो सोल इट लाइक, यस वी कैन से दैट सोल इट लाइक homogeneous case, yes or no? We already discussed that one, यस और नो? और ध्यान से देखना, इस स्टेप में आपको कांस्टेंट C1 एंड C2 की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी। कहां तक करना है? जहां तक होमोजेनियस सॉल्यूशन आपने लिखा था इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट्स, वहीं तक सोल्व करनी, isn't it? So let us call whatever solution you got, we can say that let us call, yes, homogeneous solution. This one is homogeneous solution. Yeah, same procedure whatever we discussed for homogeneous can be applied here. इस homogeneous solution को आपने replace कर दिया an superscript h. This represents a homogeneous solution. And remember guys, do not solve, yes, do not solve, yes, constant c1 and c2 at this particular step, isn't it? This one is clear to everyone or not? You only tell me, isn't it? Tell me guys, this one is clear to everyone or not? गारंटेड आप देख सकते हो, लास्ट बहुत सारे प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस देखोगे तो जो ट्रेंड है लास्ट 5 6 7 ईयर्स का, उसमें आप देखोगे इससे गारंटेड क्वेश्चंस आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टाइप है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। स्टेप 1 क्लियर है सभी को? यस, ओके। सो राइट डाउन नेक्स्ट स्टेप, दैट इज स्टेप 2। ओके, क्लियर है तो बोलो, अगर नहीं है तो बोलो। दैट इज स्टेप 2। ध्यान से देखना, फर्स्ट स्टेप आपने क्या किया? राइट हैंड साइड को इक्वेट किया 0 से, तो आपका होमोजेनियस रिकरेंस रिलेशन मिलेगा। होमोजेनियस को सोल्व करना, उसका जो सॉल्यूशन है वो लिखना, बट कांस्टेंट्स को इस स्टेप पे सोल्व नहीं करना। सेकंड क्वेश्चन ध्यान से देखना, इन होमोजेनियस को सोल्व करना, exactly this problem is divided into two parts, or we can say that in two solutions. First one is known as homogeneous solution. Yes, we already seen this one in step 1. स्टेप 2 में आपको एक और सॉल्यूशन निकालना है, दैट इज नोन एज यस ट्रायल पर्टिकुलर सॉल्यूशन। स्टेप 3 में क्या करेंगे? दोनों सॉल्यूशंस को क्या करेंगे? ऐड करेंगे, इजंट इट? ओके, so second step is yes choose, yes we can say that find out the or choose a trial particular solution or simply particular solution, isn't it? And this solution is yes chosen with the help of some yes predefined table. One table is given to you, from that table you can choose the trial particular solution, and this solution depends on the yes format of the right hand side. Means after yes shifting all recursive terms in left hand side, whatever the format of right hand side, then this solution will depend on that particular format of right hand side. Okay, so we can say that choose a trial particular solution based on what? Yes, we can say that based on what? Based on the form or format of yes right hand side yes function. ठीक है, जैसे इस एग्जांपल में राइट हैंड साइड आपका क्या था? 5n+2, कई बार ये n²+3 कुछ भी हो सकता है। सो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हो सकते हैं राइट हैंड साइड में, सो अकॉर्डिंगली आपको ये चूज करना है। तो अकॉर्डिंग टू द यस फॉलोइंग टेबल, दिस टेबल इज गिवन टू यू according to the following table, isn't it? So one table is given to you, this table will help you to choose a trial particular solution. Okay, so I am writing what is the type of the right hand side function, isn't it? Right hand side function, then we'll see okay what is the type. So we'll see what is right hand side, yes, then we'll see what is the particular solution. Okay, particular solution. Now you only tell me राइट हैंड साइड में आपका क्या हो सकता है? कोई कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, दैट मींस राइट हैंड साइड में कोई फंक्शन है वो कांस्टेंट हो सकता है, यस, जैसे 2 5 7। तो आप उसके लिए राइट हैंड साइड में कोई भी कांस्टेंट होगा तो उसके लिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपको एक कांस्टेंट बी चूज करना है, इजंट इट? ओके, नेक्स्ट वन, अगर राइट हैंड साइड में अगर मान लो लीनियर फंक्शन है, तो लीनियर ऐसे हो सकता है, लेट्स से कोई कांस्टेंट प्लस c1n, इसको लीनियर बोलेंगे, या ओनली कोई कांस्टेंट इनटू n, इसको भी लीनियर बोलेंगे, या ओनली n, ये भी लीनियर है। या अगर लीनियर इनमें से कोई भी टाइप है, तीनों के लिए सेम पर्टिकुलर सॉल्यूशन चूज करना है, दैट इज d0 प्लस d1n, where d0 and d1 are the constant, isn't it?
अगर राइट हैंड साइड में मान लो क्या है 3n, तब भी आप यही चूज करोगे। अगर मान लो राइट हैंड साइड में ओनली n है, तब भी आप यही चूज करोगे पर्टिकुलर। अगर मान लो राइट हैंड साइड में 5n+2 है, तब भी आप यही चूज करोगे। मीन्स कोई भी राइट हैंड साइड में अगर लीनियर फंक्शन है, देन पर्टिकुलर सॉल्यूशन विल बी d0 plus d1, isn't it? Next one, if right hand side is of the form, we can say that it contains or it is quadratic function. So quadratic function can be like this: c0 plus c1n plus c2n square. This is quadratic. और it could be c1n plus c2n square, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है n plus c2 into n square, या ऐसा भी हो सकता है ओनली कांस्टेंट into n square, या ऐसा भी हो सकता है ओनली n square। ये सारे के सारे क्वाड्रेटिक फंक्शंस हैं, सभी के लिए आपको एक ही पर्टिकुलर सॉल्यूशन चूज करना है, दैट इज d0 plus d1n plus d2n square। कोई डाउट है इसमें? यस, टेल मी गाइस, दिस वन इज क्लियर टू एवरीवन और नॉट? यस, यू ओनली टेल मी। तो कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन है तो सेम वे में आप चूज कर लोगे। अगर क्यूबिक है तो सेम वे में क्यूबिक आप इक्वेशन लिखोगे, d0 plus d1n plus d2n square plus d cube, यस d3n cube, यस और नो, isn't it? नेक्स्ट वन देखते हैं, मान लो कोई पावर फंक्शन है, राइट हैंड साइड में ऐसा भी हो सकता है, लेट्स से सम पावर फंक्शन इज गिवन टू यू, लेट्स से कांस्टेंट इनटू a raised to power n और ओनली a raised to power n where a is also constant। तो ये दोनों आप बोल सकते हो पावर फंक्शन है, दोनों के लिए आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन चूज करना है, दैट मस्ट बी d into a raised to power n only, यस और नो? मान लो राइट हैंड साइड में 3 into 2 raised to power n, तो आप मुझे बताओ, ठीक है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या चूज करोगे? d into 2 raised to power n only, यस और नो? दिस वन इज क्लियर टू एवरीवन और नॉट? यस, यू ओनली टेल मी। Yes guys, yes or no? This one is clear to everyone or not? Tell me once. If this one is clear to everyone, then tell me yes. Isn't it? Okay. Yes, can we proceed further? Okay. Next one, let's say fifth one. Let's say function is like this. Let's say power function. Yes, multiplied with, let's say polynomial. Yes or no? ऐसा फंक्शन है, मीन्स ऐसा हो सकता है c0 plus c1n, यस और नो, प्लस डैश 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 a raised to power n। तो इसके लिए आप क्या चूज करोगे? d0 plus d1n plus डैश 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 into a raised to power n, यस और नो? If it is the like this in this format, let's say cn into a raised to power n, then what will be the, yes, particular solution? You only tell me. Particular solution will be what? We can say that d0 plus d1n into a raised to power n. If it is like that, let's say c or only n square into 2 raised to power n, then tell me what will be the particular solution? d0 plus d1n plus d2n square into 2 raised to power n and so on. This one is clear to everyone or not? I hope this one is clear to everyone. Yes, yes or no? Isn't it? So we covered 2 steps. First step is what? Put right hand side equals to 0 and find out the homogeneous solution, and do not solve the constant c1, c2 and so on at this particular step. Now step 2 is what? Yes, yes, we can say that choose one trial particular solution that can be chosen with the help of this particular table. Yes or no? Yes. Now we got two particular, we can say that two solutions. First one is homogeneous and second one is what? Yes, second one is your trial particular solution. Up to this I think this one is clear to everyone. Okay, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन, ठीक है, ध्यान से देखना। Okay, now you only tell me, ध्यान से देखना। Yes, next step, step 3. Now you only tell me what to do in step 3. Now substitute, ध्यान से देखना। Now substitute, you only tell me. Now substitute the trial particular solution, trial particular solution, ठीक है, एक एग्जांपल लेंगे तो क्लैरिटी आएगी, नो नीड टू वरी एट ऑल। नाउ सब्स्टिट्यूट द ट्रायल पर्टिकुलर सॉल्यूशन इनटू द रिकरेंस रिलेशन। जो भी रिकरेंस रिलेशन आपको इनिशियली गिवन है, ठीक है, उस रिकरेंस रिलेशन में ट्रायल पर्टिकुलर सॉल्यूशन को क्या करना है? सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है, एंड सोल्व, यस,
the conditions or solve the constants, yes, d नोट d1 d2 एंड so on. ठीक है, मीन्स थर्ड स्टेप में क्या करना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन को किस में पुट करना है, यस, जो गिवन रिकरेंस रिलेशन है, और वहां से आपको जो कांस्टेंट्स आपने यूज किए ट्रायल पर्टिकुलर सॉल्यूशन में डी नोट डी वन डी टू, इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी. isn't it isn't it tell me guys, yes or no? नेक्स्ट वन, लेट्स से स्टेप 4. स्टेप 4 में क्या करना है, ठीक है, ध्यान से देखना, जो आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ध्यान से देखना, अब आपको जनरल सॉल्यूशन मिलेगा. जनरल सॉल्यूशन मींस फाइनल सॉल्यूशन, एंड दैट विल बी, यस, ऐड बोथ द सॉल्यूशंस. फर्स्ट वन इज व्हाट, होमोजेनियस सॉल्यूशन, and second one is your particular solution, isn't it? Now add both these, yes or no, isn't it? Write down next step, last step, that is fifth step. Noted or not, tell me. Note down किया सभी ने? Yes guys, you only tell me. नोट डाउन किया सभी ने? आगे बढ़ते हैं फिर. Okay, so write down next one, that is last step, that is step 5. That is lastly we can say that solve the constants जो आपने अभी तक सोल्व नहीं किए थे, C1 C2 एटसेट्रा in, ठीक है, by substituting the initial conditions. Isn't it? फाइनली लास्ट स्टेप में आपने जो होमोजेनियस सॉल्यूशन में जो कांस्टेंट्स आपने छोड़ दिए थे उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे. Isn't it? Okay, so write down one example. From this particular example we'll see how to proceed this particular solution. Okay, so guys, write down first question. Yes, this is the first question, and yes, try this one sincerely. This question is, let's say t of n minus 7 t of n minus 1, then let's say that is plus 10 t of n minus 2 equals to, let's say, 8n plus 6. You can, yes, observe or you can see this particular recurrence relation is of inhomogeneous type, yes or no, can we say or not? Now you only tell me if this one is inhomogeneous, so apply all 5 steps one by one and tell me what will be the correct answer. Yes, एक क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, मुझे सोल्व करना है, यस, और आप ट्राई करोगे, टेल मी वंस. यस, आप ट्राई करोगे या मुझे सोल्व करना है? यस गाइस, टेल मी वंस, कैन यू ट्राई इट वंस? यस, कैन यू ट्राई इट वंस और नॉट, टेल मी वंस. Yes, yes, so try it once, take your time and tell me what will be the correct answer. Okay, this is first question only, I will explain. Yes, step by step we'll see all these steps, step 1 to step 5, isn't it? Okay, so try once and tell me what will be the solution. Okay, don't go for any shortcut. जहां पे भी shortcuts लगेंगे मैं आपको खुद बता दूंगा. या simply you need to apply these 5 steps only, step 1 to step 5, nothing else. Okay, simple predefined procedure is there, no need to, yes, no need to do anything extra. Okay, simply apply these 5 steps. Okay, मैंने बोला आपको गारंटेड है, एक क्वेश्चन इससे फिक्स है, इनहोमोजेनियस से ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अपन देखने वाले हैं. अगर आप केयरफुली फोकस नहीं करोगे तो गारंटेड क्वेश्चन नहीं होगा. जहां पे भी डाउट्स आए आप बोलते हुए चलना है. अगर आप रिप्लाई नहीं करोगे तो मुझे नहीं पता चलेगा आपके डाउट्स क्या हैं. यस, so you are free to ask any doubt. Whenever you have any doubt, then you are free to ask me. Okay, yes, tell me once what will be the solution. Okay, step by step करना है. Step 1, yes, step 1, then step 2, isn't it? Yes, firstly we'll see what is step 1. So what is the step 1?
Yes, after shifting all recursive terms means containing t. Yes or no? Yes, shift all recursive terms in left hand side. Then whatever is remaining, that is right hand side. So put right hand side equals to 0. That is the step 1. So your recurrence relation becomes t of n. Yes, minus 7 t of n minus 1. Yes or no? Then we can say that plus t of yes 10 t of n minus 2 equals to 0. That is your step 1. Yes or no? Now write down, yes, this one becomes what? Homogeneous. If right hand side equals to 0, then it becomes homogeneous. So solve it like a homogeneous solution. Yes or no? So in homogeneous what we will write? Yes, characteristic equation. So t of n, ठीक है, इसको रिप्लेस करेंगे स्मॉलेस्ट सब्सक्रिप्ट को t पावर 0 से, उससे ग्रेटर को t पावर 1 से, उससे ग्रेटर को t पावर 2 से, एंड सो ऑन. So it becomes what? T square minus, we can say that 7t plus 10 equals to 0 or not. So what are the roots? T minus 5 into t minus 2. Yes, that is equals to 0. So we can say that t equals to 2 comma 5. Yes or no? So you only tell me what will be the homogeneous solution. Yes, homogeneous solution will be C1 2 raised to power n plus C2 into 5 raised to power n. Yes, tell me step 1 is clear to everyone or not? If you guys have any doubt, then you are free to ask. Yes, tell me once. If you guys have any doubt, then you are free to ask. Isn't it? Okay. Then that is step 2. Step 2 is what? Yes, choose trial particular solution, that is T superscript P n. This is the representation, nothing else. तो आप मुझे बताओ, राइट हैंड साइड इज ए लीनियर फंक्शन. So from table you can see, for linear function, yes, we can say that what will be the particular solution? D naught into D naught plus D1n. Yes or no? So from there, with the help of table, we can say that particular solution will be D naught plus D1n. Yes or no? Isn't it? Okay. इतना क्लियर है सभी को? कोई भी किसी भी स्टूडेंट को डाउट है, देन यू आर फ्री टू आस्क. अगर आप डाउट्स नहीं पूछोगे तो मैं कैसे क्लैरिफाई करूंगा? Okay. Now proceeds to step 3. What is the step 3? You only tell me. Yes. Yes. You only tell me what is the step 3. We discussed it. Yes or no? So step 3 is yes, substitute this particular trial solution in the given recurrence relation. So this is Tn. P is just for notation purpose. So T of n is D naught plus D1n. So put yes, D naught plus D1n in place of T of n. Yes or no? तो इस रिकरेंस रिलेशन में आप पुट करोगे तो आप मुझे बताओ क्या बनेगा. यस, टी ऑफ एन ये गिवन था -7 टी ऑफ एन माइनस 1 प्लस 10 टी ऑफ एन माइनस 2 इक्वल्स टू 8n प्लस 6. इसमें टी ऑफ एन की वैल्यू ये पुट करोगे तो ये बनेगा डी नॉट प्लस D1n. -7 टी ऑफ n माइनस 1 में पुट करोगे देन इट बिकम्स डी नॉट यस प्लस D1n माइनस 1. then plus 10 t of n minus 2 में सब्स्टिट्यूट करोगे then it becomes d naught plus d1 into n minus 2. yes or no? that is equals to 8n plus 6. अब यहां से मुझे बताओ, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के फॉर्मेट में लेके आओ. समथिंग कांस्टेंट मल्टीप्लाई विद n प्लस कांस्टेंट. लेफ्ट हैंड साइड को रिड्यूस करो, सोल्व करो, सिंप्लीफाई करो, उसके बाद इक्वेट कर सकते हो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को. then equate LHS with RHS and tell me what will be the values of D naught and D1. So try it once. Yes, सिंप्लीफाई करना स्टेप बाय स्टेप, नो शॉर्टकट एट ऑल. अगर शॉर्टकट्स अगर अप्लाई करोगे तो गारंटेड है कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होगी. सिंपल वन है. यस, यू ओनली टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑफ D naught and D1. यस गाइस, टेल मी. ओके, स्टेप बाय स्टेप सिंप्लीफाई करना है. ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सिंप्लीफाई करना है. यस, आई एम एक्सपेक्टिंग करेक्ट वैल्यू फ्रॉम ऑल ऑफ यू. यस, डी नोट एंड D1 सिर्फ कैलकुलेशन है, नथिंग एल्स.
Yes, simplify it and tell me what will be the correct answer. Yes, tell me guys. सिंपल वन है, कोफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे, फाइनली लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के फॉर्मेट में बनाएंगे, देन इक्वेट एलएचएस विद राइट हैंड साइड. यस, एनीबडी? सिंपल कैलकुलेशन, नथिंग एल्स. यस, टेल मी वंस. ठीक है, तो जहां पे भी ध्यान से देखना, कैलकुलेशन में कहीं पे भी आपको ध्यान से देखना, हार नहीं माननी है, कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप करते रहना है. और ऐसे आप अगर आप 8-10 प्रॉब्लम सोल्व करोगे तो आप कंफर्टेबल फील करोगे. नो नीड टू वरी एट ऑल. यस, डन और नॉट? अगर आप सोल्व कर रहे हो तो बताओ, अगर खाली बैठे हो तो बताओ, मैं सोल्व करता हूं फिर. डू यू वांट मोर टाइम और व्हाट? यस गाइस. इसका आंसर हाँ एन के टर्म्स में ही आएगा फाइनल आंसर तो. बट टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑफ डी नोट एंड डी वन. डी नोट और डी वन कॉन्स्टेंट है, कुछ कॉन्स्टेंट वैल्यूज आएंगी डी नोट एंड डी वन की. फर्स्ट टेल मी व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ डी नोट एंड डी वन. एनीबडी? यस गाइस, टेल मी. सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसमें क्या दिक्कत है? टेल मी वंस. ओके ओके, आई एम गोइंग टू सॉल्व इट. ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप करना है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ. ध्यान से सुनना. इसको हम लिख सकते हैं ऐसा. ध्यान से देखना, डी नोट माइनस 7 डी नोट प्लस 10 डी नोट. यस, यू ओनली टेल मी. प्लस डी वन एन माइनस 7 डी वन इंटू एन माइनस 1 प्लस 10 डी वन. ओके, then we can say that plus 10 d1 into n minus 2. yes or no? ठीक है, इक्वल्स टू 6 प्लस 8n. लिख सकते हैं ऐसा. इसको अगर अपन ठीक है मर्ज करें, सिंप्लीफाई करें, तो ये आप लिख सकते हो 4 डी नोट प्लस डी वन एन माइनस 7 डी वन एन, देन प्लस 7 डी वन, देन प्लस 10 डी वन एन, देन माइनस 20 डी वन इक्वल्स टू 6 प्लस 8n. ठीक है, बोल सकते हैं ऐसा. वो डाउट है इतने में? ओके, आगे मैं इसको ऐसा लिख दूं. ध्यान से देखना, इसको मैं मर्ज करके ऐसे लिख रहा हूं. इतना नोट किया सभी ने? ओके.
आगे मैं लिख रहा हूं इसको, यस आगे मैं लिख रहा हूं, दिस इज इक्वल्स टू 4d0 माइनस 13d1, then plus we can write it down d1, yes d1 minus 7d1 plus 10d1 into n equals to 6 plus 8n or not? Yes or no? Now you only tell me it can be written like this or not. 4d0 minus 13d1 plus 4d1, yes, into n, that is we can say that 8n plus 6. आप बोल सकते हो d नोट and d1 are constant, this is constant, plus this is also constant into n. So equate कर सकते हो constant 4d नोट minus 13d1 equals to 6 and 4d1 equals to 8. From here we can say that d नोट value is 8 and d1 value is 2. Simple था. Yes, कोई डाउट है इसमें? Yes, you only tell me guys. Okay, now you only tell me what is the step 4. Step 4 is the, yes, write down the, yes, both the solutions in summation. Yes, the final solution will be the summation of both the solutions. Yes or no? So we can say that a homogeneous solution with plus with a particular solution. So homogeneous solution आपने निकाला था, that was C1 into 2 raised to power n plus C2 into 5 raised to power n प्लस आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या था? यस क्या था आप बताओ मुझे. पर्टिकुलर सॉल्यूशन था डी नोट प्लस डी वन एन. तो पुट डी नोट वैल्यू दैट इज 8, डी वन वैल्यू कितनी आई है 2, सो 8 प्लस 2n और नॉट. यस लिख सकते हैं, दोनों को ऐड किया आपने. देन नेक्स्ट वन इज फाइनल वन इज स्टेप 5. यू ओनली टेल मी व्हाट विल बी द स्टेप 5. So initial conditions are given to you, t0 equals to 1, that is given to you or not? Given है? Yes or no? Yes, यहाँ पे आप लिख लो, these are the initial conditions. Without initial conditions, yes, we cannot find out the values of constants. Let's say this one is given to you, t0 equals to 1 and t1 equals to 2. These are the initial conditions. These are given in the question itself. Okay, so from these initial conditions find out the values of c1 c2. तो आप बताओ, यस टी नॉट इस इक्वेशन में पुट करो टी एन वैल्यू 0, तो ये क्या आएगा c1 प्लस c2 प्लस 8 इक्वल्स टू 1 और नॉट. यस वैल्यू 1 इक्वल्स टू 1 इक्वेट करेंगे, तो यहां से आप बोल सकते हो c1 प्लस c2 इक्वल्स टू -7. Similarly, you only tell me one more initial condition is given to you, that is t1 equals to 2. So put n equals to 2 in equation 1. So it becomes what? You only tell me. Yes, it becomes what? Twice of c1 plus 5c2 plus 10 equals to 2. That is equation 2. Yes or no? From equation, let's say this one is equation 3 and this one, sorry, equation 2 and this one is equation 3. So with the equation 2 and 3, find out the values of c1 and c2. Yes, you only tell me. So C1 will be what? -9 and C2 will be 2. Yes, now substitute this one in equation 1. So your final solution will be what? C1 value is -9. So -9 into 2 raised to power n plus 2 into 5 raised to power n plus 8 plus 2n. That is your required solution. Yes or no? ये फर्स्ट क्वेश्चन था, कोई डाउट है इसमें? Yes, you only tell me guys, this one is clear to everyone or not? Isn't it? Yes. Right on, next question. सभी को समझ आ रहा है या नहीं? Tell me once. What about others guys? Tell me. This one is clear to everyone or not? Okay. तो ध्यान से देखना, इन बिटवीन कुछ क्वेश्चंस में ऐसा हो सकता है, लेट मी से, ध्यान से देखना, मान लो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपने ये चूज किया है, कई बार मान लो आपने डी भी चूज किया होगा, मान लो राइट हैंड साइड में कांस्टेंट है, तो आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन डी, ओनली डी चूज करोगे. जब इस डी को चूज करोगे तो इसको थर्ड स्टेप में गिवन रिकरेंस रिलेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे, तो आप देख सकते हो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन दिस वन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन. तो टी ऑफ एन भी डी होगा और टी ऑफ एन माइनस वन भी डी होगा प्लस 10 टी ऑफ एन माइनस टू भी डी होगा.
Yes or no? Yes, got this point or not? Tell me. Isn't it? Whenever particular solution is independent of n, so whether it is Tn or T of n minus 1 or T of n minus 2, everywhere we will substitute D only. Yes or no? Okay. Write down next one. Yes, write down next question. That is question number 2. Write down next question number 2. That is solve the particular or solve this particular recurrence relation. So recurrence relation is given to you. Let's say this one is given to you. Yes, S of k plus 5. Yes, S of k plus 5 S of k minus 1. Yes, equals to 9. And initial condition is also given to you. Yes, solve this particular recurrence relation. That is the question. Yes, what will be the solution? सिंपल वन है, कुछ नहीं है, स्टेप बाय स्टेप करना है, स्टेप 1 स्टेप 2 अप टू स्टेप 5, नथिंग एल्स। ठीक है, अभी ध्यान से देखना, इसमें वेरिएशंस बहुत है, वो वेरिएशंस करेंगे। ठीक है, बहुत सारे वेरिएशंस आएंगे, धीरे धीरे अपन प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या, ठीक है, गेट में क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, इस पे बेस्ड एक थ्योरम है, वो थ्योरम भी अपन करेंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आप देख सकते हो उस थ्योरम पे बेस्ड 2-3 टाइम्स क्वेश्चंस आ चुके हैं। दैट थ्योरम इज यस इन दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन टेक्निक आल्सो। यस, ओके, यस, फर्स्ट स्टेप करेंगे, राइट हैंड साइड को 0 पुट करो, एंड s ऑफ k प्लस 5 s ऑफ k माइनस 1 बिकम्स इक्वल्स टू 0। यस, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आएगी, इसको t पावर 0 से रिप्लेस करोगे, इसको t पावर 1 से। यस और नो? सो इट बिकम्स व्हाट, t प्लस 5 इक्वल्स टू 0 और नॉट? Then t value will be equals to minus 5. Yes, so your homogeneous solution will be what, c1 into minus 5 raised to power k only. Yes or no? Isn't it? Now what will be the step 2? You only tell me what will be the step 2. Yes, particular solution choose करोगे तो क्या होगा, right hand side is a constant, so क्या आएगा, d only. Yes or no? From table you can choose this trial particular solution or not. Now what will be the step 3? You only tell me what will be the step 3. So we can say that step 3 will be what? Yes, put this trial particular solution in the given recurrence relation. So you can see this solution is independent of k. So for s of k it will be d only. Yes, for s of k minus 1 also it will be d only. That is equals to 9. So from here we can say that 6d equals to 9. So d value will be 3 by 2. Yes or no? That is 1.5. Isn't it? Now what is step 4? You only tell me step 4. Yes, now step 4 is, yes, sum these two solutions, that is summation of homogeneous as well as particular. So homogeneous solution क्या था? Yes, you only tell me, c1 into minus 5 raised to power k. Yes, plus we can say that 3 by 2 d. So the d can be written like this, 1.5. Yes. Now you only tell me what will be the step 5. You only tell me step 5 will be, yes, use initial condition, that is s of 0 equals to 6. So put yes, k value equals to 0 in step 4 or equation 1. So it becomes what, s of 0. Yes, that is, yes, we can say that c1 into minus 5 raised to power 0 plus 1.5 equals to what is given, 6. Yes or no? So here we can say that c1 value will be what? C1 value will be 4.5 or not? Yes or no? Okay. Now final one, yes, substitute this value in step 4. So the final answer will be s of k equals to, C1 value is 4.5 into minus 5 raised to power k plus 1.5. That is your required solution. Yes or no? Yes, you only tell me this one is clear to everyone or not. Yes guys, what about others? Tell me, are you getting or not? Other students, tell me. Only one student is replying continuously. What about others? क्लियर है? ओके, अब मुझे बताओ, ध्यान से देखना, मान लो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कुछ वेरिएशंस देखते हैं, ध्यान से देखना। यू ओनली टेल मी, मान लो होमोजेनियस के लिए वेरिएशंस देखते हैं, यू ओनली टेल मी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे लिखेंगे। लेट्स से वन रिकरेंस रिलेशन इज गिवन टू यू an,
plus 5 an minus 2, yes, equals to, let's say, 0. Now tell me what will be the, yes, characteristic root equation. You only tell me. You only tell me what will be the equation. Yes, you only tell me what will be the equation. यस, क्लियर है। स्मॉलेस्ट को टी पार 0 से, फिर उससे जो ग्रेटर है n माइनस वन दैट इज नॉट प्रेजेंट, उससे ग्रेटर है उसको टी स्क्वायर से, सो इट विल बी टी स्क्वायर प्लस 5 ओनली। इजंट इट? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? इजंट इट? दिस वन इज क्लियर टू एवरीवन और नॉट? इजंट इट? ओके, राइट डाउन नेक्स्ट वन। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। इस बार आपका क्वेश्चन का आंसर करेक्टली आना चाहिए। लेट्स से दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 3. After doing some examples, we'll see some previous year gate problems also. Okay, now you only tell me, let's say, solve this particular recurrence relation. An equals to 5 an minus 1, okay, minus 6 an minus 2 plus 5 raised to power n. ध्यान से देखना, कल अपन इसको फिनिश आउट करेंगे, ठीक है? तो ध्यान से देखना, कल का इंपॉर्टेंट, बहुत कल का जो लेक्चर होगा दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें वेरिएशन है, जो थ्योरम है वो मैं कल एक्सप्लेन करूंगा, और उसी पे बेस्ड आप देख सकते हो 2-3 टाइम्स क्वेश्चंस आ चुके हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर लास्ट कल का लेक्चर अपन आप अटेंड नहीं करोगे, देन देयर इज नो मीनिंग ऑफ लर्निंग रिकरेंस रिलेशन सॉल्विंग टेक्निक। So this is given to you. Okay, let's say initial conditions are not given, so your answer will be in some constants. Okay, कोई भी constants में आंसर होगा, फाइनली C1 C2 एटसेट्रा constants की वैल्यू आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो अगर आपको इनिशियल कंडीशन नहीं गिवन है तो आंसर कुछ कांस्टेंट्स में होगा, तो आप वही आंसर बताओ। उसके बाद कुछ सिंपल है, उसके बाद तो अगर इनिशियल कंडीशंस गिवन है तो इजीली आप C1 C2 की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते। यस, टेल मी व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। Okay, so try it once. This one is, we can say that step 1. So it can be written like this or not. रिकर्सिव टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में लाओगे, राइट हैंड साइड में क्या होगा? 5 रेज टू पावर n. दैट मींस दिस वन इज इनहोमोजेनियस। तो अप्लाई स्टेप 1। स्टेप 1 का प्रोसीजर क्या है? पुट राइट हैंड साइड इक्वल्स टू 0, so it becomes what? an minus 5 an minus 1 plus 6 an minus 2 equals to 0 or not? Yes or no? Yes. Now you only tell me, yes, write down the characteristic equation, so that will be t square minus 5t plus 6 or not? Yes or no? Now you only tell me what will be the roots. Yes, we can say that roots will be 2, 3. So what will be the homogeneous solution? Yes, homogeneous solution will be what? Yes, we can say that C1 into 2 raised to power n plus C2 into 3 raised to power n. Yes or no? Okay. Now second step is what? Step 2. Yes, step 2 क्या होगा? Yes, write down the particular solution, and particular solution can be chosen with the help of table. So from the table we can say that right hand side is a power function. So power function है, yes or no? तो आपने देखा पावर फंक्शन के लिए क्या यूज करेंगे? पर्टिकुलर सॉल्यूशन d into, yes, a power n, that is 5 power n. Yes or no? d into 5 power n, isn't it? Now what is the step 3? You only tell me step 3. Yeah, step 3. ध्यान से देखना, what will be the step 3? Yes, step 3 will be the, yes, substitute this particular, yes, this particular solution in the given recurrence relation. So an की जगह इसको put करोगे, so it becomes d into 5 raised to power n minus 5d. Yes, we can say that 5d into 5 raised to power n minus 1. Then we can say that plus 6d into 5 raised to power n minus 2 equals to 5 raised to power n. Now tell me what will be the value of d. That is your task.
सब्स्टिट्यूट किया आपने गिवन रिकरेंस रिलेशन में ए एन की वैल्यू, ठीक है, जो स्टेप 2 से आपने सॉल्यूशन लिखा। नाउ टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डी। यस, यस, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डी? यस गाइस, सिंपल कैलकुलेशन, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डी? यस, एनीबॉडी? एक्सप्लेन करना है या बता रहे हो टाइम चाहिए? बताओ फटाफट। सब कुछ आप सीख लेते हो, सिंपल कैलकुलेशन में जाके फंस जाते हो। दैट इज नॉट फाइन। आई एम सेइंग यू करेक्टली गाइस, दैट इज नॉट फाइन। सिंपल एक इक्वेशन गिवन है, यहां से आपको डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर यहां से डी की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पा रहे, दैट मीन्स यू आर नॉट गुड इन एल्जेब्रा। ओके, एनीबॉडी? एक्सप्लेन करना है तो बोलिए, और टाइम चाहिए तो बोलिए। इतना टाइम सफिशिएंट था डी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। यस गाइस, टेल मी वंस। यस, -25/6, नो, +25/6। ओके, तो जब भी ऐसा पावर फंक्शन हो, तो यहाँ पे 5 रेज टू पावर n, 5 रेज टू पावर n-1, यहाँ पे लोवेस्ट पावर क्या है? 5 रेज टू पावर n-2, तो दोनों साइड में उससे डिवाइड कर दो। ठीक है, तो डिवाइड बाई, यस वी कैन से दैट 5 रेज टू पावर n-2 ऑन बोथ साइड्स। जो भी लोवेस्ट पावर है पावर फंक्शन में, उस फंक्शन को से डिवाइड कर दो। उससे डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा d इंटू 5 स्क्वायर माइनस 5d इंटू 5 पावर 1। yes or no? Then it becomes 6d into 5 power 0, then it becomes 5 square। तो यहां से आप देखोगे it becomes 25d minus 25, yes d plus 6d equals to 25। तो ये कैंसिल आउट होगा, तो d वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25/6। यस और नो? यस और नो? तो यहां से स्टेप 4 में चलेंगे। तो स्टेप 4 क्या होगा? दोनों सॉल्यूशंस को ऐड करोगे, homogeneous plus we can say that particular solution। yes or no? So it becomes what? C1 into 2 raised to power n plus C2 into 3 raised to power n plus we can say that d into 5 power n। So d value is 25/6 into 5 power n, that is your required solution। ठीक है, C1 C की वैल्यू, C1 C2 कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, बिकॉज इनिशियल कंडीशंस आर नॉट गिवन टू यू, इजंट इट? ओके, और क्वेश्चंस करोगे? यस, टेल मी। हाँ जी, बोलिए। यस, और क्वेश्चंस करने अभी? यस, व्हाट अबाउट अदर्स? टेल मी वंस। एक क्वेश्चन, लेट्स से लास्ट क्वेश्चन। solve the following recurrence relation।
an is given to you an minus 2 divided by 4 for n greater than equals to 2, and a naught is given to you 1 and a1 is given to you 0. That is the yes question. Last question, you can solve it. Simple question and nothing else. Just try it once and tell me what will be the solution. Solve the following recurrence relation. Yes. Done or not? Once you done, then tell me. Once you done, then tell me. Then I will explain. Okay. ओके आपने किया तो आप मुझे बताओ इसको आप लिख सकते हो फॉर ए एन इक्वल्स टू ए एन माइनस टू इसको आप लिख सकते हो फॉर ए एन माइनस टू इक्वल्स टू जीरो आप मुझे बताओ गिवन रिकरेंस रिलेशन इज होमोजेनस और इनहोमोजेनस दिस वन इज होमोजेनस यस और नो दिस वन इज होमोजेनस so what will be the characteristic equation that is 4t square minus 1 that is equals to 0. So t square equals to 1 by 4. So t will be plus minus 1 by 2. So there will be two roots that is 1 by 2 and minus 1 by 2. यहाँ पे भी मिस्टेक होने के चांसेस है की होगी किसी ना किसी ने ऐसी मिस्टेक हाँ जी बोलिए की या नहीं हाँ जी ठीक है उसके बाद मुझे बताओ दो आपके रूट्स है तो क्या लिखोगे यस जनरल सॉल्यूशन c1 into 1 by 2 raised to power n then plus c2 into minus 1 by 2 raised to power n. Yes or no? Now with the initial conditions a naught is given to you 1. So put yes n equals to 0. So it becomes what c1 plus c2 equals to 1. That is equation 2. Yes or no? One more in initial condition is given to you a1. So it becomes c1 by 2. Then minus c2 by 2 equals to 0. So it becomes what c1 minus c2 equals to 0. That is equation 3. So from here we can say that c1 value equals to yes 1 by 2 or not. Yes or no? Okay. Similarly we can say that c2 value is also 1 by 2. Yes or no? c1 equals to 1 by 2, c2 equals to 1 by 2. So what will be the solution? An equals to yes put in the equation 1. Yes c1 value is 1 by 2 into 1 by 2 raised to power n. Then this is plus 1 by 2 into minus 1 by 2 raised to power n. Yes or no? ये आपका required solution. Yes, this is your required solution. Yes or no? Tell me this one is clear to everyone or not. ठीक है? Isn't it? इस सॉल्यूशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो अगर ये आपको ऑप्शन में ना मिले तो घबराने की जरूरत नहीं है थोड़ा सा आप ऐसे चेंजेस कर सकते हो नॉर्मल मैथमेटिक्स यूज कर सकते हो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 1 by 2 रेज टू पावर n plus 1 इसको लिख सकते हो माइनस माइनस 1 by 2 इंटू माइनस 1 by 2 रेज टू पावर n अब यहाँ पे आप देख सकते हो बेस सेम हो गया तो पावर्स ऐड हो जाएंगी तो आप इसको लिख सकते हो 1 by 2 रेज टू पावर n plus 1 minus minus 1 by 2 raised to power n plus 1. That is your correct answer. Yes or no? Tell me. This one is clear to everyone or not? हाँ जी और क्वेश्चंस करने हैं
हाँ, और क्वेश्चंस करने हैं, टेल मी। बहुत सारे वेरिएशंस अपन करेंगे, सारी मोस्टली जितनी भी टाइप्स जहां पे आप मिस्टेक कर सकते हो वो सारी मैं आपको कवर करवाऊंगा। ठीक है, तो मुझे पता है, आइडिया है कहाँ पे आपकी मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो उस टाइप के सारे क्वेश्चंस, सारी पॉसिबिलिटीज अपन कवर करेंगे। यस। हाँ जी, और क्वेश्चंस करने हैं? यस, टेल मी। यस, अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप करेक्टली करते तो हम यहीं पे स्टॉप कर देते। ओके, ओके, okay guys, so guys, you can like the session, you can subscribe our channel. Our channel name is Let's Crack GATE CSE. Okay, use my code that is day one to get the subscription. During subscription, use my code that is day one and get a discount of 10%. Also guys, you can follow me on Unacademy learning app. First download Unacademy learning app, and after that, from my profile link is given in the description of this video. From there you can follow me, so that you will be getting the notifications regarding live lectures. Okay, also you can press the bell icon to get the notification. Okay, okay guys, thank you so much. So I'm going to close the session, so we'll continue tomorrow, and tomorrow's lecture will be very very important. Okay, I already told you guys. Okay, so guys, please be on time. Okay, okay, so thank you so much. So I'm going to close the session. Okay, thank you so much.